Hello and welcome to Legacy IS Academy. In today's video, we are going to discuss about the Rohingya crisis. And क्योंकि Rohingya crisis has already been discussed sufficiently, so in this video we are not going to discuss about who are Rohingyas, although I'll give you a brief summary about who are Rohingyas. लेकिन we are going to discuss about a specific incident that has occurred lately. ठीक है, इसमें UN के भी कुछ retaliatory statements आए हैं and the case was being discussed in Supreme Court. So we are going to discuss कि Supreme Court का क्या कहना है, UN का क्या कहना है, and whether in all of this what should be India's stance in giving refuge to the Rohingya refugees. ठीक है. So a quick summary of who is Rohingya refugees. They are Muslim minorities from Myanmar region who have migrated to Bangladesh, and from Bangladesh they have also entered into India. ठीक है. So they are considered to be one of the most universally across the world, they are considered to be one of the most persecuted population refugees. ठीक है. और इंटरनेशनली बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं टू टेक केयर ऑफ रोहिंग्याज, फॉर द रिलोकेशन ऑफ रोहिंग्याज, जहां वो रह रहे हैं उनको सूटेबल हैबिटेट्स प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. Myanmar itself, because of its disturbed current polity, is not able to take care of the population. Although ये situation तो अब हुआ है. Myanmar, when it was having a stable democracy under Aung San Suu Kyi, that time also the Rohingya refuge crisis was still taking place. ठीक है. That was also one of the reason कि that for the fall of the democratic government of Aung San Suu Kyi, Rohingya refugees को वो deal नहीं कर पाई थी. The problem was not solved by the democratic government. That was also one of the reasons for the fallout of the democratic government. ठीक है. But talking about the case in particular, जो ये case हुआ है वो Rohingya refugees से related एक lawyer, he was registering a case to the Supreme Court, discussing the case with the Supreme Court. और Supreme Court का कहना था कि नहीं, we will not be granting refuge to the Rohingyas. Now let us discuss about this case. ठीक है. So जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, द लॉयर, ही वाज स्टेटिंग कि अ सेट ऑफ रेफ्यूजीज, कुछ रेफ्यूजीज थे जिनको कि न्यू दिल्ली से अंडमान एंड निकोबार लेके गया था, एंड आफ्टर अंडमान एंड निकोबार दे वर मेड टू सिट ऑन अ बोट विद लाइफ जैकेट्स एंड इंटरनेशनल वाटर्स में ले जाकर के उनको छोड़ दिया गया. ठीक है. So the case was stating कि this is against the humanitarian laws, against the principle of non-refoulement, that India has taken this step, and we should take some measures कि आगे इस तरीके का incident ना हो. ठीक है. So obviously the court was asking कि if you have any evidences, please provide us with the evidences. तो for that the affidavit, it has been asked कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज प्रोवाइड us with an affidavit, whatever phone calls, whatever UN investigation report you have, that needs to be attached to the court on record में ये सब चीज डालेगी, but you need to attach an affidavit to that. ठीक है. So talking about the arguments against the Supreme Court's decision, Supreme Court has ultimately stated कि इनको refugee नहीं provide किया जाएगा. We will not be providing them with refugees. If they are staying here, it is all fine. But deportation also, Indian also needs to think about deportation of these population. ठीक है. So talking about कि whether this decision was correct or not, तो आर्टिकल 21 और द आर्टिकल इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल कहता है कि द कोर्ट इटसेल्फ हैज नॉट शोन कंसिस्टेंसी इन टेकिंग डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्यास. कभी वो बोलती है इनको डिपोर्ट नहीं करो, कभी वो बोलती है कि इनको डिपोर्ट कर दो. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोस थ्री केसेस आल्सो. लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 एंड 21, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स आल्सो, and Rohingyas are non-citizens. So article 14 and 21 is about right to life and right to equality, so that we should be granting to Rohingyas also. ठीक है. तो उन्हें हमें कुछ मतलब right to life तो definitely award करना ही चाहिए. Secondly is the article 51C of the Indian Constitution, which says that India must adhere to the international laws. इंटरनेशनल लॉज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल जो है उसे इंडिया को ओबे करने की जरूरत है, और उसमें आता है एक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट. सो व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट से? इट सेज कि if you are deporting, if there is a population which is taking refuge in your country and there is some kind of political crisis ongoing in their country which will put their life under threat,
तो यू विल हैव टू प्रोवाइड देम विथ रेफ्यूज, आप उनको वापस नहीं भेज सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे इस केस में रोहिंग्यास को म्यांमार में they think that there is a threat to their life, so they are taking a refuge in India. In such case India should not be sending them back. ऐसा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है. That is known as the principle of refoulement, and because this convention is there, so India under the obeyance of article 51 का C must adhere to this principle and not deport this population, ठीक है. These are the arguments against the Supreme Court's decision. जो अभी decision इनका लिया गया है कि we should be sending them back. Deportation तो होना चाहिए in a humanitarian form, ठीक है. Additionally, the article was also discussing कि the court stated कि इनके पास refugee card भी नहीं है. There is a difference between migrants versus refugees, and they do not have a refugee card. So the council was stating कि these are refugees by the understanding, by the definition of refugees, and not by the declaration of refugees. Not because these Rohingyas are refugees, क्योंकि वो अपने कंट्री में politically instability की वजह से या जो भी हो क्राइसिस की वजह से these people have to move away from their country. So in that case these people are refugees and not migrants, ठीक है. So the article was stating कि these are refugees not by declaration but by the definition of refugee, ठीक है. And because these are declared by UN, कि UN कहता है कि because Rohingyas are refugees, so India should also adhere to this principle that yes, the Rohingyas are also refugees, ठीक है. लेकिन this is also true कि it is not possible for a country like India to allow इतनी सारी population, बहुत सारे हमारे neighboring countries में problem है. It is not possible for India to give citizenship या residential rights to such a huge amount of population, ठीक है. United Nations का कहना है कि United Nations observed this fact that there were certain evidences कि these refugees, Rohingya refugees, were made to sit on an Indian Navy vessel, and they have launched an inquiry. United Nations has launched an inquiry against the government of India. They have stated कि ये report आया था कि there was a set of population of Rohingyas approximately 10-15 थे जिनको कि न्यू दिल्ली से by flight was they were brought to Port Blair, और Indian Navy के vessel में from Port Blair they were headed towards international waters और वहाँ life jacket पहना करके छोड़ दिए गए, ठीक है. So UN has this evidence for this. We do not have, as of now, the evidence is not presented to the Supreme Court. UN has this evidence and UN has launched an inquiry regarding this, ठीक है. So आते हैं कि कोर्ट का कहना था. कोर्ट का कहना है that because Rohingyas are not able to stay in their country, so every day we have new cases coming up with respect to Rohingyas. Court has also clarified this fact कि पहले हम लोगों ने ये बोल रखा है कि they will not be deported, ठीक है. This is all true that they will not be deported, but if such kind of incident has occurred, so there are two things that you need to clarify. One is the evidence आपको प्रूव करना पड़ेगा, and the council has stated that council has on call evidence, call based evidence that one of the person who was deported in such circumstance, one of the person who was deported had given a call to the council, and council has the evidence, that on call record they have, plus the council has also the evidence from the UN investigation report, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड कि अगर ऐसा है तो आप प्लीज एफिडेविट अटैच करो और मुझे ऑब्जर्व करने दो इस फैक्ट को. सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्टेटेड कि माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज के बीच में डिफरेंस होता है. इफ दे आर माइग्रेंट्स इट्स ओके, वी विल अलाउ देम टू स्टे बिकॉज दे विल बी गोइंग बैक, बट रेफ्यूजीज के लिए केस टू केस बेसिस पर ये डिसीजन लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट प्रीवियसली हैड अग्रीड कि डिपोर्टेशन नहीं होगा, दे विल बी अलाउड टू लिव. What were those cases? There were 3 such cases. Who were they? कि refugees के केस में ये एक केस रजिस्टर हुआ था in NHRC वर्सेस अरुणाचल प्रदेश केस, और उसमें ये बोला गया था कि चकमा refugees who had come from Bangladesh to मेघालय एंड आसाम, और मेघालय आसाम से ये अरुणाचल प्रदेश आए थे. So the Supreme Court had decided that Chakma refugees should be allowed to stay in Arunachal Pradesh. Under Article 21 we are granting them right to life, ठीक है. सिमिलरली रेफ्यूजीज के केस में ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सॉरी गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था अंडर अब्बास हबीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड अंडर दिस द गुजरात हाई कोर्ट हैड स्टेटेड कि ये जो
प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है, दैट यू शुड नॉट बी सेंडिंग देम बैक टू देयर कंट्री इफ देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी व्हिच इज ब्रिंगिंग देम थ्रेट टू देयर लाइफ। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है, दिस इज इनहेरेंट टू आर्टिकल 21 बिकॉज वी आर ग्रांटिंग देम आर्टिकल राइट टू लाइफ। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट भी आ ही जाता है। सो वी विल नॉट बी डिपोर्टिंग देम। तो कोर्ट का पहला डिसीजन इन चकमा रेफ्यूजीज दैट वी विल नॉट बी डिपोर्टिंग देम। सेकंड, इन अब्बास हबीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, not to deport them. And thirdly, Dong Liang Kham versus Union of India case, Delhi High Court, same judgment as that of the Gujarat High Court. ठीक है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट इज इनहेरेंट टू आर्टिकल 21। तो अगर इन तीनों का जजमेंट को देखा जाए तो कोर्ट अलग अलग टाइम पे ये डिसाइड की कि इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। But the same court currently is deciding, not same court I should say, Delhi High Court, Gujarat High Court, Supreme Court in this case, and Supreme Court currently is deciding कि हाँ इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, so that is what is the article discussing, that there are discrepancies in the judgment being made by the court। ठीक है, so the article was also bringing into fact एक और point, एक और information वो लाना चाह रही थी कि जिस तरीके से हम लोग रेफ्यूजीज को ट्रीट कर रहे हैं करंटली, द वे इंडिया इज करंटली ट्रीटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रेफ्यूजीज इज टोटली बेस्ड ऑन द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप यही देख लो कि तिबेटियन रेफ्यूजीज को जो इंडिया में रिसाइड करने के लिए परमिशन दिया गया, दे आर वेरी हैप्पी, वी हैव ग्रांटेड देम परमिशन टू रिसाइड इन इंडिया। अगेन अ जियोपॉलिटिकल कंसर्न दैट if there is any issue with the enemy of China, we will be taking care of them। ठीक है, सो इसलिए तिबेटियन रेफ्यूजीज को इंडिया में शरण दिया गया, वी गेव देम रेफ्यूज राइट्स। सिमिलरली श्रीलंका के रेफ्यूजीज को नहीं मिला, रोहिंग्या म्यांमार के रेफ्यूजीज को नहीं मिला, बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को नहीं मिला, और आई वुड से सर्टेन रेफ्यूजीज आर ग्रांटेड रेजिडेंशियल स्टेटस और एटलीस्ट उनको रेफ्यूज स्टेटस दिया जा रहा है, बट देयर आर सर्टेन रेफ्यूजीज हु आर नॉट बीइंग ग्रांटेड दिस स्टेटस। ठीक है, so all in all, Supreme Court is exhibiting discrepancies in the taking decisions with respect to refugees. That is what was being discussed in the article. And there is also one more fact that Supreme Court has clarified, that obviously it is not possible for India to grant refuge rights to such a huge amount of all the refugees who are coming in and around us। ठीक है, लेकिन this is also true, the court has also stated that India must come up, government of India must come up with a policy की किस कंडीशन में हम लोग किसी रेफ्यूजी को रहने के लिए देंगे, अंडर विच कंडीशन वी विल नॉट बी ग्रांटिंग देम। फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम, अभी तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल रोहिंग्या, श्रीलंका, तिब्बत, दीज आर ऑल पॉलिटिकली माइग्रेटेड रेफ्यूजीज, पॉलिटिकल इशू की वजह से दे आर रेफ्यूजीज, बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू एनकाउंटर क्लाइमेट रिलेटेड रेफ्यूजीज ऑल्सो। तो इंडिया मस्ट कम अप, सुप्रीम कोर्ट was stating कि as of now it is not possible to grant everybody refuge status, but India must come up with some kind of policy कि under such and such condition we should be granting them refuge status and allowing them to live in India, and under such and such conditions we should not be doing them। ठीक है, so that was one of the recommendations from Supreme Court। With that we have completed the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.